buzz up during the session. And yesterday we discussed that keep a notebook ready, right? जब भी मौका मिले, you should take notes. The guests are on the way. Volunteers, guests are on the way.
Students, please stand up. So good morning once again and welcome to the second day of Deeksharambh 2026. Today the session that we have here, it is one of the most interesting sessions. I'm sure that you are going to learn a lot, and this session is dedicated to physical and mental well-being, something that all of us, irrespective of students and teachers, all of us, we are struggling with too much. So I guess all of you will take good notes and take good learning back with you. So before we start the session, may I request our dignitaries on stage and off stage to please come forward for the lamp lighting ceremony. We will start the session invoking Mata Saraswati's blessings for our students' growth. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डिता
शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते So we are very delighted to have among us two very important personalities. We are joined by Mr. Tarun Toshniwal. Before I give out his bio to you, introduce him to you, I would like to request Professor Subhash Sharma, faculty in charge, finishing school ICFAI Tech, to kindly present a sapling to Mr. Tarun Toshniwal as a token of welcome. I would also like to request Professor Sir Subhash Sharma sir to please present a sapling To Mr. Narendra Yadav, we are very delighted to have Mr. Yadav along Mr. Tarun Toshniwal with us today. Thank you, sir. So let me introduce Mr. Tarun Toshniwal to you. Mr. Toshniwal is the former Deputy Director General and State Informatics Officer in IC Rajasthan. He retired as a Deputy Director General following an accomplished career spanning nearly 35 years in the IT industry. Alongside his distinguished professional journey, he has long been associated with Heartfulness as a trainer and currently serves as the Heartfulness Zonal Coordinator from the Jaipur region, actively contributing to spiritual development, community outreach, and heartfulness initiatives. We welcome Sir to you to this session. Along with Mr. Toshniwal, we are also delighted to have Mr. Narendra Yadav. He is an architect and urban planner and principal at Karyated Architects and Consultants. Alongside his professional practice, he has been associated with Heartfulness as a trainer since December 2023, contributing to the practice's community and outreach initiatives. We welcome Sir to this session. So, before further ado, I would like to hand over the stage to Mr. Toshniwal and Mr. Yadav. This is okay. Right. I think I'm audible. Yes. Right. So, thank you, Dr. Rishabh. It is such a pleasure being with you all. हिंदी में करते हैं बातचीत। तो आप सबके साथ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि आपने जो डिसीजन किया ICFAI में एडमिशन के लिए, आपने बहुत सोच समझ के बहुत विवेकपूर्ण निर्णय किया है। सो इस अच्छे निर्णय के लिए आप सबको बधाई। अपने लिए आप तालियां बजा सकते हैं। और ICFAI को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सेशन आप लोगों के लिए सोचा, बिकॉज अकेडमिकली यानी डिग्रियां तो आपको मिल ही जाएंगी, पर ये जो सेशंस होते हैं ये अक्सर
लाइफ को एक नई दिशा देते हैं। तो क्यों हमें इस अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए? मैं बिफोर आई गेट इनटू व्हाटएवर एल्स वी हैव टू डू इज, मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ और फिर उसके बाद में नरेंद्र भाई को इनवाइट करूंगा, वो थोड़ा हार्टफुलनेस के बारे में आपको बताएंगे, एंड देन वील गेट इनटू सर्टेन डिस्कशंस एंड वील आल्सो डू अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो ये गांव था। प्लीज मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ क्यों इस सेशन में हमें अटेंटिव रहना चाहिए और क्यों ये सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप ये हो सकता है तो क्यों ये सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक गांव था, बारिश के दिन थे, बाढ़ आ गई। एक आदमी था, वो ईश्वर का बहुत बड़ा भगत था। तो वो सोचता था कि बारिश मतलब पानी बढ़ने लगा गांव में, और जब बढ़ने लगा इतना हुआ कि लोग गांव खाली करके जाने लगे। उससे भी कहा चलो, उसने कहा तुम जाओ। बोला अरे डूब जाएंगे। उसने कहा नहीं, भगवान आएगा मेरी मदद करने, मैं तो उनका भगत हूं। बैठा रहा। पानी इतना आ गया कि छत तक आ गया। तो कलेक्ट्रेट से पुलिस की बोट आई, आ जाओ भाई। तो उसने कहा नहीं नहीं आप चलो, भगवान आएगा मुझे बचाने। फिर जब पानी और ज्यादा बढ़ गया, छत पे भी उसके कंधे तक आ गया, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आया और उसने कहा सीढ़ी लटकाई, आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं भगवान आएंगे मुझे बचाने। और थोड़ी देर बाद बह गया। जब ऊपर पहुंचा भगवान के पास, तो वहां जाके झगड़ा कर लिया। बोला आप क्यों, मैं तो इतना बड़ा भगत आपका, आप मुझे बचाने नहीं आए। मैं सबको कहता रहा आप आओगे बचाने। तो ईश्वर ने कहा मैं आया था, 3 बार आया था। तो एक बार आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बना सकें और कैसे अपने आप से कनेक्ट कर सकेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं नरेंद्र भाई को इनवाइट करता हूं। He'll tell you a little bit about heartfulness and then we'll further move ahead. Hello everyone. Am I audible to everyone? पीछे तक? Okay. Hi, my name is Narendra and we are here today. आप सब लोग यहाँ आए हो, आपने क्या सोचा था? What you are going to learn here today? So, हम लोग हार्टफुलनेस संस्थान से हैं। हार्टफुलनेस एक हार्ट बेस्ड मेडिटेशन सिखाती है। इट्स ए नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था जो कि 1945 से है, एग्जिस्ट कर रही है। एंड वी आर इनटू मोर देन 160 कंट्रीज विथ मोर देन 15,000 ट्रेनर्स अराउंड द ग्लोब। और हार्टफुलनेस की जितनी भी सारी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जो हमारे गाइड हैं, करंट गाइड है कमलेश डी पटेल, जिन्हें हम ताजी के नाम से भी जानते हैं। ही इज आवर मेंटोर एंड ही गाइड्स इवन अस टुडे हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ। अभी हम एक बार हार्टफुलनेस का एक वीडियो देखेंगे इस संस्था के बारे में। ये हैदराबाद में है, हमारा जो मेन कैंपस है। मोर देन 1400 एकर्स। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट सर से बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि दे आर बिकमिंग लाइक दिस, स्काई को और ग्रीन कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट वी लाइक द टारगेट इज
by 2030, we will plant more than 30 lakhs trees in this campus. A silent movement for positive transformation of the planet and its people is underway. It has spread to 160 countries and touched over 4 million people, 25,000 schools and 2,500 colleges. This movement has led to over 2 million trees being planted, 1.7 million young people being engaged in value-based projects, and over 100,000 children undergoing cognitive development training. over 55,000 grassroots workers have been trained to spread health and education awareness across India. Heartfulness is the name of this movement. And it has been driven by the dedication of volunteers Support of government institutions and the generosity of corporate partners. Transformation is natural, but it can be aided by a catalyst. Heartfulness endeavors to be the transformational catalyst that the world needs. Through initiatives in the fields of environment, education, wellness, and sports, Heartfulness constantly strives to effect positive change. Kanha Shantivanam, the International Center of Heartfulness near Hyderabad in India, is a prime example of the possibilities when there is a will to bring about change for good. Volunteers from around the world have transformed 1,200 acres of barren land into a lush, green ecosystem brimming with biodiversity. In this campus, you will find large-scale tree plantations, gardens, dense mini rainforests, sewage treatment plants, waste management processes, solar power generation, and rainwater being harvested to create large water bodies. The Forests by Heartfulness Initiative, or FBH, endeavors to replicate the success realized at Kanha Shantivanam across the country. FBH has so far undertaken several forestation, lake restoration, and agroforestry projects in association with government organizations as well as corporations. Experts customize plantation and water conservation solutions at each FBH site. Special emphasis is being given to conserving endangered tree species. As Kamlesh D. Patel, the president of Heartfulness, often emphasizes, we must all come together to leave the world a better place than we found it. For over 3 decades, Heartfulness has been running courses especially built around value education and conscious living in schools across the country. The curriculums are closely aligned with the 9 principles of the UNESCO Chair, Global Health and Education. The Heartful Campus Initiative works with colleges to develop life skills and a strong sense of universal human values in the youth. Heartfulness collaborates with AIMS, AICTE, ICAR, and other leading institutions across the country to introduce relaxation, stress management techniques, and life skills to youth who are about to join the workforce. A tele-counseling helpline called Voice That Cares offers free support to anyone suffering from mental health problems like anxiety, depression, sleep issues, and addictions. Heartfulness provides special training in best practices to grassroots health, social, and education workers who can then implement these in their respective blocks and villages. The well-equipped Medical Center at Kanha Shantivanam caters to the medical needs of over 70 surrounding villages. Heartfulness also offers preventive and curative treatments based on various knowledge systems, including yoga and Ayurveda. About 15,000 Heartfulness volunteer trainers
spread across the world, offer meditation training free of cost. Sports encourage health, self-confidence, and leadership skills. The state-of-the-art Heartfulness International Sports Center at Kanha Shantivanam seeks to provide quality training to young people interested in sports. Heartfulness is now embarking upon a project to reforest 2,000 acres of degraded forest land in Shivgarh, Madhya Pradesh. Also underway is the reforestation of the Aravalli Mountains running 750 kilometers across 3 states. A 105-acre city forest is being developed to serve as an oxygen bank for the city of Ratlam. In education, Heartfulness is collaborating with the government of Madhya Pradesh to implement the value-based curriculum in over 500 government schools. In the sports sector, Heartfulness is supporting the Pan-India Talent Hunt, a part of the Khelo India initiative. Heartfulness has a dedicated team of volunteers. However, all this also needs resources. Together, we can help strengthen this movement. Together, we can touch lives and transform the planet. Together, we can be the catalyst for positive change. So this is heartfulness for all of us. So अभी हम डायरेक्टर सर से बात कर रहे थे और वो हमको बता रहे थे कि they are implementing new programs for mental health, and we are also here for the same. Heartfulness is also here for the mental health and well-being of our all things. हमारा ये डिजाइनिंग डेस्टिनी जो प्रोग्राम है ये 3 दिन के लिए कंडक्ट होगा. इसके 3 सेशंस रहेंगे. एंड वी रियली वांट कि आप सभी लोग इसमें रेगुलर 3 दिन के लिए आए. आप इसको अपने डायरी में नोट डाउन भी करें, इसको एक्सपीरियंस भी करें, इसको फील भी करें और आप अपना फीडबैक भी नोट करें इसके लिए. So when we are here, as you can see, हम यहाँ पे एक चीज मैं आउट ऑफ द पीपीटी बात करूँ एज एन लाइक यंगस्टर. मैं भी कॉलेज में इसी टाइम पे कभी ऐसे बैठता था व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, इवन इन माय मास्टर्स. हमेशा ना एक हमारे टाइम पे ऐसे बहुत कम प्रोग्राम कंडक्ट होते थे एंड आई रियली वांट विश रहा हूँ कि हमारे टाइम पे भी ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते तो उसका शायद हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता. जब हम ये सेशंस कंडक्ट करते हैं तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम ना एक सेफ एनवायरनमेंट की उम्मीद करते हैं हमेशा, है ना, कि हमको कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, जिसके सामने हम हमारे को एक्सप्रेस कर सकें, है ना. रियली हमारी ये कंप्लेन रहती है कि हमको कोई सुनने समझने वाला नहीं है. बट ये सेशंस वैसे नहीं होंगे. हम यहाँ पे एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. आपको ना हमसे घबराने की जरूरत है. आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं ऐसा किसी भी चीज के बारे में. एंड वी शुड ट्रीट अवर फैकल्टीज लाइक मेंटोर और फ्रेंड्स ऐसा. बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ माय फैकल्टी इन माय कॉलेज डेज, अन्नपूर्णा सर, ही इज फ्रॉम हैदराबाद. ही टीच मी वन थिंग कि नरेंद्र, गलती तो होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा. गलत नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे हम. एंड ही वाज दैट लाइन इज स्टिक टू मी टिल डे कि अगर गलत नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा. हम भी यहाँ पे जो है यही सीखेंगे कि हमको प्रेजेंट रहना है, हैव फन इन दिस एंटायर सेशन, 1 पर्सन एट ए टाइम. और इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे. हार्टफुलनेस के बारे में अभी हमने सबने जाना. मेडिटेशन संस्थान है.
कनेक्ट। जो इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा है वो है कनेक्ट। कनेक्ट किससे? स्वामी विवेकानंद का एक कोट था बहुत फेमस ऐसा कि इफ यू मिस टॉकिंग टू योरसेल्फ वंस इन अ डे देन यू आर मिसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिससे आप एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते थे। ऐसा सुना, आप सबने पढ़ा है इसको? कितने लोगों ने सुना और पढ़ा है? जब हम कनेक्ट करने की बात आते हैं तो हमारे सामने ना ये 3 सवाल हैं हमेशा। आप में से आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसे अपनी डायरी के अंदर। एंड आई रियली वांट कि आप लिखो एंड यू शुड पॉन्डर ओवर ऑल दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बारे में आप सोचो कि व्हाट्स माय स्टोरी एंड व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू दिस ग्रुप, टू दिस इंस्टीट्यूट, टू दिस माय फ्रेंड सर्कल, टू माय कम्युनिटी, हु आर माय कलीग्स एंड मेंटोर्स। ये बहुत जरूरी है। शायद हमको आज रियलाइज नहीं हो, बट हमको ये पता होना चाहिए कि जब अभी हम आगे इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि whenever we feel the hurdles in our heart or in our mind, where we should go, whom should we talk? And what's the importance of guidance? Can anyone tell me what is the importance of guidance? No one? I think guidance provides a mentorship plus the way or the path where we can reach to the destination successfully. Other Yes. than that, we may deviate from the path also and may entangle with a number of issues which either I or the others were not interested in. Thank you, sir. Like the said sir, and like the हमारा जो presentation का topic है designing destiny। तो जब हम ये सवालों के साथ में आगे बढ़ते हैं let's get to know each other. It's an activity where आप अपने आसपास के लोगों को जानते हो। I mean like do you know who is sitting beside you? Get to know like एक mix club आज सारे departments के साथ में एक सारे हैं ऐसा। Even when I used to study like we also had like multiple departments, medical था सारे थे, and I used to make connection in every department. जब हम इस एक्टिविटी की बात करते हैं, अगर ओवरऑल इसको समराइज करने की बात करूं इसको मैं, हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं खुद से किसी भी चीज को लेके। हम अभी भी यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि सेशन चल रहा है, हमारा दिमाग कहीं और होगा, है ना? ऐसा है? होता है कभी ऐसा? क्लास में होते हैं प्रेजेंट पर ध्यान कहीं और चला जाता है हमारा, होता है? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसा। Like why when you are here in college, here you are in classroom, when you choose this subject, when you like decide to take the class and still we are like distracted ऐसा, then priority decide नहीं होती हमारी। And how do we decide our priorities? Like when do we have the time to decide the priority? Anyone? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और हम कैसे वो प्रायोरिटीज को चूज कर सकते हैं और उसमें हार्टफुलनेस हमारी कैसे मदद करता है। That's why we are here.
Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. Is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Now I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? Right. I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. क्या सीखा हमने इस वीडियो से? Even use the word priority. Anyone? मैं भी क्लास में से पीछे बैठता था, चुपचाप रहता था. It's an interactive session, ऐसा. Okay, if you don't want to speak, then I have a question for you guys, and you should speak now. How I would be after 5 years? Where do you see yourself after 5 years? Write it down. At least be honest with yourself. हो गया? लिख लिया होगा? Anyone wants to describe the dream? कोई भी नहीं? कोई नहीं देख रहा अपने आप को 5 साल बाद में कहीं भी? Just a forensic officer. A forensic officer. And why do you think that this will take like 5 years, or why don't you become like more than a forensic officer? I think कि कभी रुकना नहीं चाहिए. अभी आप एक डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं, उससे ऊपर कुछ अच्छा ही करना चाहिए. मतलब कभी भी आप सोच रहे हो कि हम वहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हम चाहते थे, और फिर वहाँ पे जाके हम रुक जाते हैं, या फिर अब तो बहुत है.
उस चीज को नहीं देखना चाहिए, हमें और अच्छा करना चाहिए लाइफ में, जस्ट बेटर। और आपने अभी एक पूछा था प्रायोरिटी, मतलब सर प्रायोरिटी, अब जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब आप हमें कुछ नया सिखा रहे हो, तो हम इस चीज पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि हम जो अपने घर पे छोड़ के आए हैं या फिर जो हमारी फेवरेट चीज़ें जैसे कि क्लब पार्टीज वगैरह या फिर गेम्स वगैरह, उनको उस टाइम पर प्रायोरिटी ज़्यादा दें जब उनकी ज़रूरत हो। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो अभी हम यहाँ पर उन चीज़ों को ज़्यादा सीखें। आपका नाम? मेरा नाम मुकुल कुमार। मुकुल, थैंक यू मुकुल। Anyone else? Yes, please. मेरे को टेक कंसल्टिंग कंपनी में मतलब काम करने का थोड़ा मतलब एक लगता है कि मेरे को उसमें जाना चाहिए, उस फील्ड में। जैसे लाइक है EY, आनंद यंग, मेरे को मतलब जैसे कंपनीज की जो कोई प्रॉब्लम एरर जो आते हैं उनको सॉल्यूशन करने में मतलब इंटरेस्ट है थोड़ा, तो मैं ऐसी टेक कंपनियों में एक ऐसे टेक कंसल्टिंग के रूप में काम करना चाहता हूँ। Okay, thank you. What's your name? अभिषेक शर्मा। Thank you, Abhishek. We can see